Assalamu alaikum dear students, welcome to lecture number 2 of English 1. We have completed section A, section B and section C of unit number 2. We are going to start this lecture from section D of unit number 2, that is writing. And in writing we are going to learn about writing informal letters. First of all, I am going to tell you what are the informal letters. As far as informal letters are concerned, they are usually written to the friends or family members, or to those people we have personal relationship with. These types of letters are not written in the professional situation. The letters we write in a professional situation, on the other hand, they are called formal letters. And on your screens you can see the pattern of the letter. Okay, on the very top you write your address, and after your address you write the subscription. The subscription is called just like Dear Hamid. So the words Dear Hamid, it is called subscription. Salutation, it is called salutation. And after salutation we move to the body of the letter. The body of the letter, as you can see, कि जहाँ से मेन उसकी टेक्स्ट जो है उसका आगाज़ होता है, उसको हम लेटर की बॉडी कहते हैं. ठीक है. एंड then we have the concluding remarks. So a letter has many parts, and these parts, they will be discussed. Each part has been discussed for you so that you may understand that what each part means. Okay. Number 1, the address. ये जो चीज़ आपको ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है, ये एड्रेस है. अब हमने हमेशा जो है वो इम्तिहान में लेटर लिखे हैं और हम लिखते होते हैं जी एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, बट वी डू नॉट नो कि हुज एड्रेस दिस एग्जामिनेशन हॉल इज़, कि ये एड्रेस है किसका. तो ऑब्वियसली एग्जामिनेशन हॉल में चूँकि हम बैठकर एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तो वही हमारा, यानी कि राइटर जो है वो उसका एड्रेस होता है. जो रिसीवर है उसका एड्रेस तो जब वो लेटर क्लोज होगा तो एनवेलप के ऊपर आएगा. ठीक है. या फॉर्मल जो लेटर होता है उसमें रिसीवर का एड्रेस भी लेटर के अंदर लिखा जाता है. तो द एड्रेस नंबर 1 पे जो है, अहमद हैज़ हैड रिटन दिस लेटर, सो ही इज़ द सेंडर. नोट केयरफुली द पोजीशन ऑफ अहमद or the sender's address. The sender's address should be put on the top right hand corner of the letter. Every letter must have the sender's address. Now look closely as how each item in the address is written. Number 1 पे हम सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, हाउस नंबर. तो हाउस नंबर 51/4 है. ठीक है. उसके बाद महल्ला या कॉलोनी जो है वो, या फिर गली नंबर, तो यहाँ पे नॉरस कॉलोनी लिखा हुआ है. देन रावलपिंडी. उसके बाद मुल्क का नाम जो है वो आखिर में लिखते हैं. ठीक है. ये अगर लेटर मुल्क से बाहर लिखा जा रहा होता है तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो मुल्क का नाम भी लिखते हैं. अगर मुल्क के अंदर ख़त लिखा जा रहा है तो हम कंट्री का नेम नहीं लिखते. ठीक है. तो द डेट फॉलोस आफ्टर द फुल एड्रेस इज़ कम्प्लीट. ठीक है. जब एड्रेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम जो है वो डेट लिखते हैं. जी. पर्सनल लेटर्स आल्सो नोन एज फ्रेंडली लेटर्स नॉर्मली हैव 5 पार्ट्स. कि एक लेटर जो कि लिखा जाता है, ठीक है, जिसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, जो कि दोस्तों के बीच में या फैमिली मेम्बर्स के बीच में लिखा जाता है, उसके यूजली कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 पे है जी द हेडिंग. हेडिंग जो होता है ये हम एड्रेस को कहते हैं. ठीक है. तो एड्रेस अभी आपने ऊपर लिखा कि सबसे पहले आप हाउस नंबर लिखते हैं. ठीक है. उसके बाद आप अपना
स्ट्रीट नंबर, मोहल्ले का नेम, सिटी का नेम लिखते हैं, और कंट्री का नेम उसी सूरत में लिखा जाता है कि इन केस कि जब आप लेटर बाहर के मुल्क में लिख रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है लेटर का वो होता है ग्रीटिंग या फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जो है ये आप जैसे अस्सलाम वालेकुम है, ठीक है, या डियर फ्रेंड, माय डियर, ठीक है, रिस्पेक्टेड फैमिली मेम्बर्स, तो इस टाइप के जो अल्फाज हैं ये सारे के सारे सैल्यूटेशन कहलाते हैं। द ग्रीटिंग्स ऑलवेज एंड्स विद अ कॉमा। इस बात को आपने याद रखना है कि आपकी ग्रीटिंग जो है चाहे वो फॉर्मल लेटर में है या इनफॉर्मल में है, उसका अख्तिताम हमेशा कॉमे पे होता है, ठीक है। द ग्रीटिंग बिगिंस विद द वर्ड डियर एंड यूजिंग द पर्सनस गिवन नेम और रिलेशनशिप, ठीक है। डियर के बाद आप जो है वो बंदे का नाम लिखते हैं या उस बंदे के साथ जो आपका ताल्लुक़ है वो आप लिखते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट जो है वो लेटर का बॉडी है या फिर मेन टेक्स्ट के जो आपका मेन मतन होता है, जो मेन आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, ठीक है, इट इज़ नोन एज द बॉडी। तो इसमें आप जो है वो अपना जो मैसेज है आप एक पैराग्राफ में कंप्लीट करें, आप 2 पैराग्राफ में कंप्लीट करें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, तो यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट, ठीक है। आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर मैसेज, then there is the fourth part, it is called the complementary clause. Complementary clause is a short expression of few words or a single line. It ends in comma. It should be indented. Indent का मतलब यह है कि लाइन से थोड़ा सा, हाशिए से थोड़ा सा आपने छोड़ के लिखना है। Skip on to 3 spaces, 2 is usual for the signature line। 1-2 लाइनें आप जो है वो कम्प्लीमेंट्री क्लोज के ऊपर छोड़ देते हैं ताकि आप दस्तखत कर सकें। 5वां पार्ट जो है इसका बेटा लेटर का वो होता है द सिग्नेचर लाइन, कि ऐसी लाइन मतलब कि दस्तखत जो होते हैं आपके, ठीक है, यू कॉल इट द सिग्नेचर लाइन। Write or type your name. The handwritten signature goes above the typed name. If the letter is quite informal, you may omit the signature line as long as you sign the letter, ठीक है, कि जो है आप नाम लिखेंगे, नाम लिखकर अपने नाम के ऊपर आपने दस्तखत करने हैं। ये जो 5 पार्ट्स हैं ये जो इनफॉर्मल लेटर है उसके कंपल्सरी पार्ट्स हैं, यानी कि ये 5 चीज़ें जो हैं ये उस लेटर के अंदर लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट जो है ये लेटर का एक लाजमी हिस्सा नहीं होता, बट इट इज़ एन ऑप्शनल पार्ट। इसका मतलब पोस्ट स्क्रिप्ट में आप ऐसी कोई चीज़ लिख सकते हैं जो कि आप लेटर में लिखना चाहते थे लेकिन आपको भूल गए, तो जहाँ पे आपका लेटर का इख्तिताम होता है उसके नीचे आप जो है P.S की हेडिंग देते हैं और उसके नीचे जो बात आपको बाद में याद आई है उसको आप लिख देंगे, ठीक है। आगे जो है वो फॉर्मेट पे आपको इस लेटर का फॉर्मेट जो है वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये जो है ये लेटर का फॉर्मेट है, ठीक है। ये जो आपकी लाइंस हैं यहाँ पर आपका एड्रेस और डेट आएगी, ठीक है। ये जो लाइन है इस लाइन में आप जो है वो सैल्यूटेशन देंगे। ये 2 पैराग्राफ्स जो हैं ये आपकी बॉडी है, ठीक है, और फिर यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर्स और नेम वगैरह, ठीक है, जो चीज़ें। अब लेटर लिखने के जो है वो ढेर सारे फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। एक ये फॉर्मेट है, एक वो फॉर्मेट है जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो राइट मार्जिन से शुरू होती हैं, वो भी ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोगों ने कोई इतना परेशान नहीं होना कि ये चीज़ कहाँ पे लिखी जाए और वो चीज़ कहाँ पे लिखी जाए। बेशक चीज़ें अगर आगे पीछे हो जाएं तो इससे कोई इतना ख़ास जो है वो फ़र्क आपके मार्क्स पे या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जी पंक्चुएशन पे, क्योंकि पंक्चुएशन जो होती हैं उनके नंबर होते हैं। जैसे माय डियर फ्रेंड के बाद आपने अगर कॉमा नहीं लगाया तो आपका एक नंबर कट जाता है। ऐसे ही अगर आपने योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली के बाद कॉमा नहीं लगाया तो उसमें भी आपका एक नंबर कट जाता है। तो
पंक्चुएशंस जो हैं उनका आपने ख्याल रखना है। जैसे ये यहाँ पे डियर फ्राज है, ठीक है, ग्रीटिंग है, तो इसके बाद आपने कॉमा लाजमी लगाना है, ठीक है। या फिर माय डियरेस्ट ईमान है, तो उसके बाद आपने कॉमा लाजमी लगाना है, ठीक है। और ऐसे ही नीचे क्लोजिंग में आप देखें तो वहाँ पर सिंसियरली जो है, सिंसियरली के बाद आपने कॉमा जो है वो मस्ट लगाना है। ट्रूली योर्स अगर आप लिखते हैं, जो भी आप लिखते हैं, क्लोजिंग जो होती है उसके एंड पे आपने कॉमा लगाना है। एक बात याद रखनी है कि योर्स का जो वर्ड है YOURS लिखते हैं और इसके बीच में कहीं पे भी कॉमा नहीं होता। योर्स सिंसियरली, सिंसियरली जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे कॉमा आएगा, योर्स में कॉमा नहीं होगा, ठीक है। नाउ देयर इज एक्सरसाइज नंबर 14. अंजुम सलीमी has written 3 personal letters to friends in Pakistan. In each letter he has written his address incorrectly. Can you spot the mistakes in each letter and then write out the address correctly? ठीक है, तो 3 लेटर्स इन्होंने लिखे हैं जी। तीनों लेटर्स में इन्होंने जो एड्रेस लिखा है वो इन्होंने गलत लिखा है, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई मिस्टेक, ठीक है। तो अंजुम सलीमी नंबर 1 पे तो नाम नहीं लिखा जाता, ठीक है। उसके बाद हाउस नंबर 7 लिखना था सबसे पहले, उसके बाद नाज़माबाद कराची, और उसके बाद 14 फरवरी 2005 जो डेट है ये करेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने आगाज़ जो है वो शहर से किया है, हालांकि आगाज़ करते हैं हाउस नंबर से, उसके बाद नाज़माबाद 4, फिर कराची, और फिर जो है वो पाकिस्तान, ठीक है। अब ये चूँकि लेटर जो है वो मुल्क के अंदर लिखा जा रहा है तो उसमें मुल्क का नाम जो है वो नहीं होगा, ठीक है। आगे है जी हाउस नंबर 7 नाज़माबाद कराची पाकिस्तान 14 फरवरी 2005। तो इसमें भी अगेन पाकिस्तान जो है वो चूँकि पाकिस्तान के अंदर लेटर लिखा जा रहा है, कराची के अंदर से ही मुल्क के अंदर लेटर लिखा जा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान नहीं होगा, और 14 के बाद जो है वो स्पेस होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। डेट जो है उसके बाद डेट लिखने के डिफरेंट जो हैं वो मेथड्स हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ राइटिंग द डेट। द फर्स्ट 2 आर probably the most common ways, ठीक है। तो 14 फेब जो है ये सेकंड वन है, इसको जो है वो आप यूज़ करें, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी है इनसे, ठीक है। जो फर्स्ट वन है ये 14 जो है इसको फरवरी के बाद आना चाहिए था, ठीक है। तो 2 जो सबसे ज़्यादा और जो एक्सेप्टेबल मेथड्स हैं डेट लिखने के वो ये हैं कि फरवरी के बाद आप डेट लिखें, फरवरी 14, इसके बाद कॉमा आएगा, और 2005 के बाद फुल स्टॉप आप लगाएंगे, ठीक है। एक मेथड ये है, और दूसरा मेथड 14 फरवरी के बाद कॉमा आ जाएगा, 2005 के बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये जो 2 मेथड हैं डेट के, ये एक्सेप्टेबल मेथड्स हैं, लोग इनको मतलब कबूल करते हैं। बाकी जितने मेथड्स लिखे हुए हैं इनमें जो है वो लोग इनसे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, और टीचर्स नॉर्मली जो है वो इसको अच्छा नहीं समझते, ठीक है। देन वी आर मूविंग ऑन टू ग्रीटिंग्स एंड क्लोजिंग्स, ठीक है, कि जो लेटर है उसका इख्तिताम और उसका जो आगाज़ है, ठीक है। तो पर्सनल लेटर में डियर के बाद जो है वो आप फर्स्ट नेम लिखेंगे अपने फ्रेंड का, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, या उनके साथ जो रिलेशन है वो लिख देंगे। जैसे ये नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं, डियर मिस्टर शाह के बाद कॉमा लगा लें, डियर मिस शाह, डियर डॉक्टर शाह, डियर प्रोफेसर शाह, ठीक है, जो भी हैं। तो ये लिखने के बाद आप जो है कॉमा लगा लेते हैं, तो ऐसे आपकी ग्रीटिंग जो है वो ख़त्म होती है, ठीक है। वी कैन एंड पर्सनल लेटर इन नंबर ऑफ वेज, के इख्तिताम जो है पर्सनल लेटर का उसको डिफरेंट उसके मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल लव सायरा, योर सायरा, योर सिंसियर सायरा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी मेथड जो है वो आप अपना सकते हैं, ठीक है।
You want to write to the following people, how would you start and end each letter? अली रशीद को आप लिखना चाहते हैं, जो कि आपका बहुत ही नज़दीकी दोस्त है, जिसको आप काफ़ी सालों से जानते हैं, तो आगाज़ कैसे होगा? आप जो है वो ऊपर लिखेंगे डियर अली रशीद, या फिर लिखेंगे माय डियर फ्रेंड के बाद कॉमा लगा देंगे, ठीक है। और जो क्लोजिंग होगी उसमें ट्रूली योर्स या लव के बाद जो है वो आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अमजद भट्ट साहब हैं, तो आपके प्रोफेसर हैं, तो इनको आप रिस्पेक्टेड अमजद भट्ट या रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, और जहाँ पे आपकी कंक्लूजन है तो उसमें आप योर्स सिंसियरली इनके लिए लिखेंगे, ठीक है। आप मदर हैं आपके दोस्त की आयशा रहमान, तो उनको आप जो है वो टीयर भी लिख सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्टेड लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर खालिद क़य्यूम हैं, तो उनको भी आप रिस्पेक्टेड डॉक्टर खालिद क़य्यूम लिखेंगे, और जो क्लोजिंग है उसमें योर्स सिंसियरली आप लिखेंगे। ऐसे ही आयशा रहमान वाले लेटर की जो क्लोजिंग होगी उसमें भी आप योर्स सिंसियरली लिखेंगे। ओपनिंग सेंटेंस, if someone has already written to you, this is a common way of starting a letter. We can say many thanks for your letter, thanks for your letter, thank you for your letter, thank you very much for your letter, thank you so much for your letter। कि अगर जो है वो आपको एक अदद लेटर लिखा गया है और आप उसके रिस्पॉन्स में लेटर लिख रहे हैं, तो ये जो 4-5 जुमले हैं इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लेटर का आगाज़ करने में। अगर आपको कोई उस लेटर में अच्छी न्यूज़ है, तो आप जो है वो जो ये बोल्ड वर्ड्स की लिस्ट है, जिसमें डिलाइटेड, हैप्पी, थ्रिल्ड, प्लीज्ड, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई सैड न्यूज़ है तो उसमें सॉरी, शॉक्ड या फिर अमेज्ड जो है वो इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज एक्सरसाइज नंबर 16, लुक एट phrases 1 and 11, match them with the purpose A to K, ठीक है। तो इसको आप एक्टिविटी को अटेम्प्ट करें, ठीक है, अपनी अपनी बुक्स पे, के जुमले दिए गए हैं और आपने बताना है कि हर जुमले का मकसद क्या है। दैट रिमाइंड्स मी, तो इन अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। कि आप गुफ्तगू कर रहे थे और आपको कुछ और याद आया, तो आपने जो है वो ऐसे ही बाकी जो है उसको आपने खुद फिल करना है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 17, चूज़ वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स एंड राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड और फैमिली। ये अब आपने काम जो है वो आराम सुकून से बैठ के प्रैक्टिस करनी है, कि जैसे पैटर्न आपको बताया गया है लेटर राइटिंग का, यू हैव टू फॉलो दैट पैटर्न एंड यू हैव टू राइट लेटर टू योर नियर एंड डियर वन, ठीक है। तो लेटर नंबर 1 है, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड you haven't seen or spoken to in a long time. Tell him her about what you have been doing and ask them how they are and what they have been up to recently. Write a letter to a cousin and invite them to your wedding. Give them some details about your future husband or wife. Then there is number 3. Write a letter to a friend you know has been having some problems. Ask him or her how she or he is doing and if you can help. तो अब आपको पता है कि फ्रेंडली लेटर्स जो होते हैं या लेटर टू फ्रेंड्स जो होते हैं उनका क्या फॉर्मेट होता है। और सबसे पहले जो है वो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस के बाद जो है वो आप सबसे पहले तो आपने एक जो है वो लेटर 1, 2 और 3 में से एक लेटर चूज़ करना है। उसके बाद आप टॉप पे जो है you are going to write your address and after your address or below the address you will write the date on which you are writing that letter. After that you will write the salutation
or greetings. After salutation, you will write your main message or the body of the letter. After completing the body, you will write the complimentary closing, that is yours sincerely, and after that you will write your name and you will print your signatures on that letter. And if you have forgotten anything that you wanted to say, you can write it in the postscript section. But keep it in mind that postscript section is not the compulsory section. It is an optional section. If you have need, you can use it. However, if you do not feel the need, you can skip it. Okay. Now we are moving on to section E, that is related to listening. Listening. In this section, you will be learning about listening to a lecture and taking notes. नोट टेकिंग जो है बेटा, ये एक बहुत ही अहम स्किल है जो कि हम सब के पास होना चाहिए. यूजली होता क्या है कि टीचर जो है वो अपना लेक्चर दे रहे होते हैं, स्टूडेंट्स के हाथ में जो है वो पेंसिल होती है और नोटबुक होती है, और वो या तो नोटबुक के ऊपर जो है वो लाइनें लगा रहे होते हैं, या वो नोटबुक के ऊपर जो है वो सिग्नेचर अपने जो है वो उनकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. ठीक है. तो लिसनिंग जो है, इसको हम ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ पैसिव स्किल ना. पैसिव का मतलब ये है कि आप खामोशी से बैठे रहें और अगला बंदा बोलता रहे. लिसनिंग जो बेसिकली होता है, जो एक्टिव लिसनिंग है, इट इज़ एन एक्टिव स्किल. एक्टिव स्किल का मतलब ये है कि आपका माइंड भी इसमें इन्वॉल्व होता है. ठीक है. और आप एक्टिवली उसको जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करके जो है वो अपने माइंड में मतलब के प्रोसेस कर रहे होते हैं, और उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके उनके जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप जो है वो नोट्स डेवलप कर रहे होते हैं. ठीक है. तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनका ये वैसे जानना होता समझना है कि लेक्चर्स जो हैं दे आर मोर वैल्यूएबल एज़ कम्पेयर टू द टेक्स्ट बुक्स. तो लिसनिंग टू द लेक्चर एंड टेकिंग नोट्स इज़ indeed really beneficial if you consider the long term goals of the education. तो now the question is कि what is note taking. तो note taking की definition है कि note taking involves listening to the lecture and summarizing it in your own words what is said during the lecture. कि note taking क्या है कि आप जो है वो you are listening to the lecture और साथ साथ आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद आप अपने अल्फाज में उस लेक्चर का खुलासा बना रहे हैं और उसको जो है वो आप अपनी नोटबुक के ऊपर यू आर नोटिंग इट. नाउ if we consider the pace of the lecture, so in most of the lectures the pace of the lecture being delivered is pretty fast, so it is not possible for us to write down each and everything that the teacher is telling us in the lecture. So it is not our task while taking the notes to note down each and every word that comes out of the mouth of your teacher. So what you should note down is the essential and the key points. कि अहम बातें जो होती हैं, जो किसी चीज़ की डेफिनेशन बताई जाती है, उसको आपने नोट डाउन करना होता है. और इसके अलावा की पॉइंट्स, जो अहम नुक्ते होते हैं, जो अहम नुकात होते हैं, उनको यू हैव टू नोट देम डाउन. आप उसको पैसिवली जो है वो बग़ैर अंडरस्टैंडिंग के आंखें बंद करके सुनते ना रहें, बल्कि साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के बाद उसको जो है वो आप लिखते जाएं. ठीक है. साथ साथ तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, नोट टेकिंग. कि टीचर के जो लेक्चर है उसके मेन पॉइंट्स जो हैं उनको यू आर टेकिंग नोट्स. although you cannot write as quickly as the lecturer talks, you can think faster. Good notes depend on fast thinking and concentration. के जो अच्छे नोट्स होते हैं वो फास्ट थिंकिंग और जो कंसंट्रेशन है
वो उनके अंदर होती है कि आप कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से बातें सुन रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उनको अपने वर्ड्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो नोट टेकिंग के अंदर आपका मकसद होता है वो नंबर 1 पे होता है कि सिलेक्ट करना कि ये बात जो है वो लिखनी है और ये बात जो है वो इग्नोर करनी है। उसके बाद जो बात लिखनी है उसको समराइज़ करना। समराइज़ मतलब कि आपने खुलासा बना लिया उसका, ठीक है। उसके बाद उसको क्लासीफाई करना और ऑर्गेनाइज। क्लासीफाई का मतलब कि कैटेगरी के अंदर लिखना कि ये कौन सी कैटेगरी है और उसके मुताबिक उसको सीक्वेंस देना कि ये नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे आएगा या फिर नंबर 3 पे आएगा। टेकिंग नोट्स helps you focus. Speakers tend to repeat and summarize their points often during the lecture. कि लेक्चर के दौरान यूजुअली क्या होता है कि टीचर्स जो हैं दे कीप ऑन रिपीटिंग द थिंग्स, कि वो एक चीज़ को 3 से 4 दफ़ा रिपीट करते हैं, ठीक है। तो यू कैन यूज़ दिस टाइम कि ये जो वक्त है कि जिसमें रेपिटिशन हो रही होती है, इस वक्त को जो है वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं लिखने के लिए, कि इस वक्त के दौरान जो बात बताई जा रही है आप उसको जो है वो दोबारा से लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू मिस अ पॉइंट प्लीज सम स्पेस एंड कंसल्ट विद अनदर स्टूडेंट और द प्रोफेसर आफ्टर द क्लास। कि अगर आपसे कोई नुक्ता जो है वो मिस हो गया है, ठीक है, तो आप जो है वो फ़ौरन उस नुक्ते के पीछे ना पड़ जाएं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है, उस बच्चे ने क्या लिखा है। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आप इधर उधर देखना शुरू कर देंगे, तो यू आर गोइंग टू मिस मोर पॉइंट्स। तो इंस्टेड ऑफ focusing on that last point, what you should be doing is you should leave some space, कि आप जगह छोड़ दें अपने नोटबुक में, ठीक है। and after the lecture is over you can consult with other students or the professor, ठीक है। तो वो जो आपका एक नुक्ता या एक पॉइंट आपसे मिस हुआ है उसको आप बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। यूजुअली जो आपके साथ वाले स्टूडेंट्स होते हैं या आपकी क्लास के जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं दे नोट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो यू कैन टेक देयर हेल्प, और स्टूडेंट्स जो हैं दे आर यूजली हेल्पफुल टू ईच अदर। इसके बाद जी कुछ यूज़फुल टिप्स हैं आपके लिए दैट कैन हेल्प यू बिकम एन इफेक्टिव लिसनर। नंबर 1, बिफोर यू लिसन डेवलप अ प्रॉपर माइंडसेट टूवर्ड लिसनिंग, दैट इज़ प्रिपेयर योरसेल्फ टूवर्ड लिसनिंग दी लेक्चर के आगाज़ से पहले आप अपने आप को जो है वो मेंटली प्रिपेयर करें, जहनी तौर पर जो है वो अपने आप को आप रेडी करें कि आप लेक्चर सुनने जा रहे हैं। इन्हेंस योर फिजिकल एंड मेंटल अलर्टनेस बाय सिटिंग इन फ्रंट और सेंटर ऑफ द रूम, के फ्रंट रो में या बिल्कुल सेंटर में रूम के आप मतलब कि बैठें। उससे क्या होता है कि आपका आई कांटेक्ट स्पीकर के साथ ज़्यादा डेवलप होता है और आपकी मेंटल अलर्टनेस जो है वो उससे रिफ्लेक्ट होती है। चूज़ अ नाइस लुकिंग नोटबुक दैट विल इनकरेज यू टू टेक नोट्स। नंबर दी पेजेस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, के नंबर दें अहम पॉइंट्स को। डू सम प्रायर रीडिंग इफ़ यू कैन अबाउट द टॉपिक बीइंग प्रेजेंटेड इन दी लेक्चर, के अगर आपके पास वक्त हो, आपको पता हो कि टॉपिक क्या है लेक्चर का, तो उसके बारे में आप पहले थोड़ा सा पढ़ लें। ये थी प्री एक्टिविटीज़। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू वाइल यू लिसन दी लेक्चर एक्टिविटीज़। पे अटेंशन टू द स्पीकर फॉर द वर्बल, postural and visual clues to what is important. सेकंड पॉइंट है रेजिस्ट द डायरेक्शंस और बोर्डम, कि डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं कि क्लास में ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी हरकतें कि जो कि आपकी अटेंशन को लेक्चर से हटाएं, उनको रेजिस्ट करें थोड़ा सा। लेबल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, के जो अहम नुक्ते हैं उनको अंडरलाइन करें या उनको लेबल करें ताकि पता चले कि ये अहम नुक्ता है। इफ़ योर लेक्चरर हैज़ एन एक्सेंट यू फाइंड हार्ड टू अंडरस्टैंड और हैज़ mannerism you find distracting, relax and attend even more carefully to the content of the lecture. When possible, translate the lecture into your own words, but if you can't, don't let it worry you. कि अगर मुमकिन हो तो आप जो है वो लेक्चरर जो हैं आपके उनके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। बी कंसिस्टेंट इन योर यूज़ ऑफ एब्रीविएशंस, कि जब आप लेक्चर को नोट कर रहे होते हैं तो उसमें एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल का वर्ड है तो उसको ई लिखें, बिकॉज को सी जेड लिखें, ठीक है। तो ऐसे ही बंदा कुछ अपने एब्रीविएशंस बना लेता है और वो एब्रीविएशंस जो है वो हमारी राइटिंग की स्पीड को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। ऐड विजुअल क्लूज टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ योर नोट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल यूजिंग अंडरलाइनिंग
asterisk, arrow, boxes, bubbles, color highlights for etc. आस्क क्वेश्चंस इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, ये सबसे अहम नुकता होता है कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आस्क क्वेश्चंस, के आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सकें कि जो चीज़ की जा रही है वो आपको समझ नहीं आई और वो उसको दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन करें. एड योर ऑन आइडियाज़ एंड रिफ्लेक्शंस कीपिंग देम सेपरेट फ्राम दोज ऑफ द स्पीकर, के जो आपके अपने आइडियाज़ हैं उस मतलब कि जिस मौजू पे बात हो रही है या जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको भी नोट करें, लेकिन उसको सेपरेट नोट करें, उसको मिक्स ना करें. वॉच आउट फॉर पॉइंट्स दैट आर एम्फेसाइज्ड और रिपीटेड बाय द लेक्चरर, के ऐसे नुक्ते के जिन पे जोर दिया जाता है उनका ख्याल करें, जिनकी रेपिटिशन होती है बार बार उनका ख्याल करें. ठीक है. दीज आर लाइकली टू कम इन योर टेस्ट एग्ज़ाम्स, ऐसा मुमकिन है कि वो चीज़ जो कि रिपीट होती है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है. इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग योर नोटबुक एज सून एज द लेक्चर finishes and getting ready to leave, listen carefully to information given towards the end of the class. Sometimes the lecturer summarizes or highlights the main points or may give possible questions. ठीक है कि आखिर में जब लेक्चर ख़त्म होता है तो उस वक्त ख़ास ध्यान दें. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एंड पे बाज़ टीचर्स जो होते हैं वो अपने लेक्चर का खुलासा बयान करते हैं और बाज़ टीचर्स जो होते हैं वो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं. आफ्टर यू लिसन टू द लेक्चर को सुनने के बाद के जो स्टेप्स हैं, रिव्यू योर नोट्स के नंबर 1 पे अपने नोट्स को रिव्यू करें. फिल इन द मिसिंग पॉइंट्स और मिस अंडरस्टूड टर्म्स फ्रॉम द टेक्स्ट और अदर क्लास फेलोज़, कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपसे रह गई है उसको आप बाकी क्लास फेलोज़ की हेल्प लें और उसको फिल करें. एडिट योर नोट्स, लेबलिंग मेन पॉइंट्स, रिमेंबरिंग क्लूज एंड क्वेश्चंस दैट मे नीड फर्दर आंसर्स, और मेकअप योर ऑन पॉसिबल टेस्ट क्वेश्चंस, के जो लेक्चर दिया जाता है उसके बारे में आप अपने पॉसिबल टेस्ट क्वेश्चन जो हैं वो साथ साथ बनाते हैं. ठीक है. रिमेंबर टू आइडेंटिफाई एज अर्ली एज पॉसिबल द मेन पर्पस ऑफ द लेक्चर, सबसे पहला आपका मकसद क्या है कि लेक्चर का जो मेन मकसद है उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना. टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, कि मेन पॉइंट क्या है, सपोर्टिंग डिटेल क्या है, उनका डिफरेंस जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है. टू रिव्यू योर नोट्स, अपने नोट्स को रिव्यू करना है. ठीक है. टू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लेक्चर, के लेक्चर के दौरान और लेक्चर के बाद क्वेश्चनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है. टू बी सिलेक्टिव इन व्हाट यू राइट, यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग डाउन, कि बी सिलेक्टिव, जब आप लिख रहे होते हैं, जब आप नोट्स ले रहे होते हैं तो उसमें सिलेक्शन करें, ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ जो है उसको आप लिख दीजिए. ठीक है. इसके बाद नोट टेकिंग की एक एग्जांपल है. ठीक है, कि ये मेन पॉइंट है, ये आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है. ये जो आपको ब्लू में दिए गए हैं, ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं. ठीक है, और आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. उसके बाद ये योर रिफ्लेक्शन के आपने जो अपने जहन से कुछ जो है वो चीज़ें बनाई हैं. ठीक है. द लिस्ट बिलो शोज सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिग्नल्स यूज्ड इन लेक्चर्स to indicate lecture structure, but in this unit we will only give you practice in understanding only 6 signals. If you follow the guidelines and listen to the recorded text carefully, then you will be able to take notes. सिग्नल्स होते हैं. ठीक है, कि लेक्चर जो है वो लेक्चरर जो हैं आपके वो लेक्चर्स के अंदर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे हमें पता चल जाता है कि अब इंट्रोडक्शन हो रहा है. फॉर एग्जांपल, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक. इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें डिफ़ाइन किया जाता है. उसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कि इसके पीछे की जो इन्फॉर्मेशन है कुछ वो आपसे शेयर की जा रही है. उसके बाद डिफ़ाइन का वर्ड आता है जिसमें डेफिनेशन होती है. एन्यूमरेटिंग या लिस्टिंग, के लिस्ट बनाने. गिव एग्जांपल्स, शोइंग इम्पोर्टेंस और एम्फेसाइजिंग. ठीक है, तो ये 6 नुकात जो हैं ये यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे. ठीक है. At the beginning of the lecture, the lecturer will give you some idea about the structure. Listen for those introductory signals as it will help you understand what I intend to say. कि ये जो अल्फाज हैं ये इन पे फोकस करें. तो इन पे जब आप फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेक्चरर जो है आपका उसके लेक्चर का मकसद क्या है. ठीक है.
आगे जो है वो एक्सरसाइज है 18, इसको आपने खुद अटेम्प्ट करना है। दूसरा पॉइंट है जी गिविंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कि जो लेक्चरर हैं वो आइदर रेफर बैक टू प्रीवियस लेक्चर्स और गिव यू सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। नॉर्मली द लेक्चरर यूजेस दीज एक्सप्रेशंस एज वी नो, कि जैसा कि हम जानते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, कि जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है या देखा है, ठीक है। तो इस किस्म के जो अल्फाज हैं इनसे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अब हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो कि ऑलरेडी हमारे पास है और ये इस लेक्चर के मतलब के बैकग्राउंड डेवलप करने में अहमियत रखती है, ठीक है। अगेन देयर इज़ एन एक्टिविटी एंड यू हैव टू do this activity on your own, because if we get involved in these activities we are going to waste some time, because in this lecture I have to complete this unit number 2 plus unit number 3. The third thing is defining. Lecturers often define the difficult terms or they define the topic that is being covered, तो आपने definition जो है उस पे फोकस रखना है और definition को खास करके नोट करना है। डेफिनेशन का आगाज़ कैसे होगा? इज़ कॉल्ड, इज़ नोन एज, मे बी डिफाइंड एज, ठीक है। अगेन देयर इज लेट अस कंटिन्यू लिसनिंग टू Mrs. Wasim's lecture. As you listen, concentrate on 2 terms that she defines and then writes those terms and their definitions, ठीक है। तो अगेन नंबर 4 पे लिस्टिंग है, एनुमरेटिंग के सबसे पहला नुक्ता, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर इज़, द सेकंड पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर इज़, द नेक्स्ट पॉइंट, द फाइनल पॉइंट। इस किस्म के जो अल्फाज हैं ये हमें बताते हैं कि जनाब अब जो है वो नया नुक्ता या नया पॉइंट जो है उसका आगाज़ हो रहा है, ठीक है। नंबर 5 पे गिविंग एग्जांपल्स के मेन पॉइंट जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। सो व्हेन यू आर टेकिंग नोट्स यू डू नॉट नीड टू नोट डाउन एग्जांपल्स, ऑल you need to note down is definition, and if you feel that you have ample time you can also note down the examples, but examples are not important. Okay, the number 6 point is showing. When you are taking notes you cannot write down every word, you need to distinguish between important and less important information. The lecturer can use these signals to draw your attention to the important points. I want to stress, I want to highlight, I would like to emphasize, it's important to remember, we should bear in mind, the crucial point is, ठीक है। तो ये जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज के बाद आने वाले जो अल्फाज होते हैं वो यूजली बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 23 है, ठीक है। इसको आपने you have to attempt this exercise on your books. Now we are going to move to unit number 3 of this book. Okay, unit number 3 has also been divided into 5 sections like other units. Similarly, the section A is related to function and section B is related to structure. After structure there will be writing section. Similarly उसी पैटर्न पे बिल्कुल 5 सेक्शंस हैं इसी के भी। फंक्शन में जो है थर्ड यूनिट में जो आप सीखेंगे वो है एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग, के whenever we are engaged in conversation with anybody, जिस किसी के साथ भी जब कभी भी हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो sometimes we have to show agreement, sometimes we have to show disagreement, कि हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं या हम आपकी बात से डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउ डू वी शो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, this is what we will be learning here. There is an example given below. There are 2 friends, number 1 Kashif and number 2 Basim. They are discussing about one of their courses at college.
Listen to their conversation and notice how they agree with each other on different issues. Kashif, of course, on business management uh, is too theoretical. It should be more practical, don't you think? Basim, I couldn't agree with you more. I am just doing the course to get my degree. I don't think that it's going to help me in practical life after I leave college. Kashif, exactly. And I can't understand most of the theories that are discussed. I just learn my notes by heart. Basim, so do I. We should complain to the head of the department. Kashif, I think you're right. I suggest that we see him as soon as possible and request him to add some practical aspects in it. Basim, I agree, but don't you think that we should also talk to other class fellows and ask their opinion as what they think about the course? Kashif, good idea. Let's ask them tomorrow. Basim, absolutely. So this is a dialogue in which two friends have shown agreement on an issue that they believe that their course is of a theoretical nature and it should be more of a practical nature. So they have the same opinion. ठीक है. यू मस्ट हैव नोटिस कि आपने नोटिस किया होगा डायलॉग के अंदर, ठीक है, कि कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं जिनको यूज़ किया गया है टू शो एग्रीमेंट. नंबर 1 पे था जी आई एग्री विद यू. नंबर 2 येस आई क्वाइट एग्री. आई एब्सोल्युटली एग्री. आई couldn't agree with you more, कि इससे ज़्यादा जो है वो और एग्रीमेंट नहीं हो सकता. यू आर राइट, यू आर क्वाइट राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं दे हैव बीन यूज्ड इन द अबव मेंशन्ड डायलॉग टू शो द एग्रीमेंट. आपके एग्ज़ाम में भी इस पे जो है वो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. तो यू नीड टू कीप दीज एक्सप्रेशंस इन माइंड. इसके अलावा देयर कैन बी मैनी मोर एक्सप्रेशंस. Just use the internet and Google them. I'm pretty sure that you will be able to find hundreds of expressions that can be used to show agreement. ठीक है. Now there is this exercise number 1. Express your agreement about the following issues. Choose different expression each time from the ones given above. Buy a land to build a house in Islamabad. I think you're right. We need to build a house in Islamabad because most of our family members live देयर. ठीक है. उसके बाद जो है वो इस पे आपने एग्रीमेंट शो करना है. गेट अ CNG किट फिटेड इन योर कार. यू आर एब्सोल्युटली राइट. दिस इज गोइंग टू सेव a lot of money. ठीक है. If you get a CNG kit fitted in your car, it will certainly save you a lot of money. Plant more trees in the residential area. इसके लिए जो है वो सिंपली आप एग्री का वर्ड इस्तेमाल ना करें तो ये भी अच्छा है. तो इसमें हम एग्री का वर्ड नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है. प्लांट मोर ट्रीज इन द रेजिडेंशियल एरिया. तो एक एग्रीमेंट का अंदाज़ ये भी हो सकता है, येस दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम, कि जो बात आप कर रहे हैं वो हमारे वक्त की ज़रूरत है. तो ये भी एग्रीमेंट का एग्री करने का एक अंदाज़ है. एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स टू ऑल द चिल्ड्रन इन द कंट्री. इसका जो आप मतलब कि पॉजिटिव आंसर अगर दें कि दिस विल मेक आवर कंट्री पोलियो फ्री, तो ये भी जो है वो एग्रीमेंट का एक अंदाज़ है. ठीक है. सो दैट वाज एक्सरसाइज नंबर 1. नाउ वी आर गोइंग ऑन टू रीड एक्सरसाइज नंबर 2. हियर इज़ अनदर सिचुएशन वेयर आमिर एंड जहांगीर are talking about cricket. When you listen to their conversation, pay attention to how they are disagreeing with each other. ऊपर जो आपने डायलॉग पढ़ा था उसमें
दो लोग एक इशू पे एग्री कर रहे थे, एग्रीमेंट शो कर रहे थे, यानी कि मुत्तफ़िका थे, उनकी राय मुत्तफ़िक थी। ये जो डायलॉग है इसके अंदर जो दो लोग हैं उनका डिसएग्रीमेंट शो किया गया है, दैट दे आर डिसएग्रीइंग ऑन एन इशू, ठीक है। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, वेर एवर आई गो पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। जहांगीर, डोंट यू लाइक क्रिकेट? आमिर, नो आई डोंट, आई थिंक इट्स सच अ बोरिंग गेम वॉच बाय अनइंटरेस्टिंग पीपल, ठीक है। तो अब ये जो नो आई डोंट, ये डिसएग्रीमेंट का एक अंदाज है, ठीक है। आई एग्री दैट इट कैन बी लिटिल स्लो बट सॉरी इट कांट बी बोरिंग। अब ये जो सॉरी इट कांट बी बोरिंग का वर्ड है, ये जो ऊपर आमिर का एक्सप्रेशन था कि जनाब क्रिकेट बहुत बोरिंग गेम है, ये उससे डिसएग्रीमेंट का एक अंदाज है। आमिर, नॉनसेंस, it goes on for hours and nothing ever happens. Most of the players are either sitting in the pavilion or standing around in the field doing nothing. Well, I certainly don't agree. जहांगीर कहता है कि जनाब I certainly don't agree, जो कि एक disagreement का expression है। I think it's a captivating game. Do you like any other sport? Ahmed, no. I think all games are waste of time. ये जो एक्सप्रेशन है उसका नो, आई थिंक ऑल गेम्स आर वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ आल्सो अ वे टू शो डिसएग्रीमेंट, ठीक है। आमिर एंड जहांगीर डू नॉट एग्री विद ईच अदर while discussing cricket. Let us read some common expressions of disagreement in English. जो कॉमन एक्सप्रेशन है डिसएग्रीमेंट को शो करने के लिए, वो नंबर 1 पे तो होगा जी आई डोंट डिसएग्री। उसके बाद आई एम सॉरी बट आई डोंट एग्री विद यू। आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री विद यू एट ऑल। आई कांट एग्री विद यू, नो यू आर रॉन्ग, कि आप गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक यू आर क्वाइट मिस्टेकन, कि मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी हुई है, यू आर क्वाइट मिस्टेकन। यू आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, कि आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एक्सप्रेशंस दैट कैन बी यूज्ड टू शो डिसएग्रीमेंट. Disagree on the following issues. Choose different expression each time from the ones given above. Girls should not be allowed to participate in sports events in the country. कि हमारे मुल्क में गर्ल्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो स्पोर्ट्स इवेंट का हिस्सा लें, ठीक है। तो उसके बाद डिसएग्रीमेंट शो किया गया, आई थिंक यू आर क्वाइट मिस्टेकन, गर्ल्स शुड गेट सेम अपॉर्चुनिटीज़ लाइक बॉयज़। उसके बाद है जी पुलिस शुड बी गिवन टोटल कंट्रोल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. नो, दिस विल result in misuse of authority. कि इसके नतीजे में क्या होगा कि पुलिस जो है वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगी. We should allow Indian films to be screened in the country. I think Indian culture is a bad influence on our youth. ठीक है, तो ये भी डिसएग्री करने का अंदाज़ है. टीनेज ऑफेंडर्स शुड बी अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट्स. एब्सोल्युटली नॉट हम कह सकते हैं. Not, they should be given a chance for new start. ठीक है, कि टीनेज ऑफेंडर्स जो हैं कि वो लोग जो कि बचपन में ही या बिल्कुल जवानी में जो है वो मतलब जराइम करते हैं, उनको मार देना चाहिए. तो हमने डिसएग्रीमेंट शो किया कि एब्सोल्युटली नॉट, दे शुड बी गिवन अ चांस फॉर अ न्यू स्टार्ट, कि उनको
ज़िंदगी को नए सिरे से आगाज़ करने का चांस जो है वो देना चाहिए, ठीक है। Now let us take you back to the conversation between Kashif and Basim. Notice how Kashif agrees with Basim in recorded text 13. I don't think that it's going to help me in practical life after I leave college. Exactly का word जो है ये agreement के लिए है Kashif. Let's ask them tomorrow. Basim, absolutely. ये exactly और absolutely जो हैं, जो expressions हैं, they are also used to show agreement, ठीक है। इसके बाद जो है वो डिसएग्रीमेंट के लिए ऐसे सिंगल वर्ड एक्सप्रेशन जो है जिसमें ये नॉनसेंस का वर्ड आया है, ठीक है। तो दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट एंड स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, ठीक है। इसके बाद नीचे कॉलम में आपको वर्ड्स की एक लिस्ट दी गई है जो कि स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट और स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट को शो करते हैं, जिसमें एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, राइट, क्वाइट ट्रू, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट को शो करने के लिए, ओ कम ऑन, नॉनसेंस, रबिश, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, यू मस्ट बी जोकिंग। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं दे आर यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। इसके बाद देयर इज़ एक्टिविटी। नेक्स्ट यू हैव एन एक्टिविटी जिसमें एक इंटरव्यूअर जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी से गुफ्तगू कर रहा है और एग्रीमेंट के और डिसएग्रीमेंट के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको थोड़ा सा आपने नोट करना है। इंटरव्यूअर, सर, बीइंग द डीजी ऑफ पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, व्हाट वुड यू like to say about increasing environment degradation and desertification in the country? Increasing environment degradation in the country, that is absolutely incorrect statement, ठीक है। तो ये disagreement का expression है, ठीक है। But you are quite right that desertification is increasing, ठीक है। तो ये agreement का expression है, ठीक है। Sir, it is believed that Pakistan Environment Protection Agency is doing nothing to safeguard our environment. How would you like to comment? Rubbish. Rubbish का जो word है, it is used to show strong disagreement. These are just rumors. We are doing everything in our power to safeguard our environment. But sir, we hardly see any improvement in the environment conditions. Oh, come on. Again, it is an expression of disagreement. You see changes everywhere. You need to have a sharp eye to notice the difference in all these sectors. We have taken steps for environmental planning measures to curb pollution, preserve ecology, physical planning, urban settlement, urban water supply, sewerage and drainage. There is one common view about the agency, that they have failed in their tree plantation target. How would you like to comment on this? You must be joking. It is again an expression of disagreement. Who has given you these false ideas? Let me put the facts straight. Tree planting campaigns are launched at national level during spring and monsoon seasons. During tea plantation campaigns, all the government departments, private organizations and NGOs are involved in planting activities. The achievements made since 1990 are tremendous. Yes, there is some truth in the fact that at times the target of forestation is not what we predict. One last question, sir. I hope you will agree with me that drought still prevails in some parts of the country. Drought का मतलब होता है कि lack of rains, ठीक है, खुश्क साली। तो डीजी साहब he agrees, he says absolutely is an expression that is used to show strong agreement. Desertification has become the greatest threat to humanity. We have taken measures to reduce and
reverse the effects of drought and other forms of land degradation. ठीक है. Then there is exercise number 3. You have to solve this. You must have noticed that TG has used certain expressions that convey strong agreement or disagreement. Listen to their conversation again and then list all those statements which express strong agreement and strong disagreement. Then there is exercise number 4. Listen to the conversation between two friends, Sobia and Hina. Hina is agreeing with everything Sobia says. When you listen to the conversation, notice long pauses. Try to construct your own responses or expressions of agreement. Think how Hina would agree with Sobia's statement. Then continue listening to the conversation and notice how both friends are agreeing with each other. ठीक है. तो इसमें आपने जो है वो एक्सप्रेशंस एग्रीमेंट के कुछ अपने पास से लिखने हैं, कुछ आपने अंडरलाइन करने हैं. ठीक है. Then there is this exercise number 5. Listen to the conversation between two friends, Sobia and Hina again. But this time Hina is disagreeing with Sobia. इसमें आपने disagreement के expressions जो हैं उनको नोट करना है, और जहाँ पे वक्फा खामोशी है वहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि if you feel that you have any expression of disagreement in your mind, you can use that expression to fill in this blank. Now we are moving on to the next section of this unit, that is structure of language. और structure में जो जिस चीज़ पे हमारा फोकस होगा, it is the simple past tense. Simple past tense जो है it is very easy. ठीक है. सिंपली आप जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. वर्ब की दूसरी फॉर्म जो है उसको आप इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट टेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस आपका बच जाता है. ठीक है. So we use past tense to tell about something that happened at a specific time in the past. The simple past tense is one of the most common tenses in English. When you talk about an event that happened in the past, it is very natural to tell your listeners or readers when it happened. Past tense is usually formed by adding ed to verb. Let us learn some basic rules about how to form the past tense. Past tense क्या होता है कि वर्ब के साथ सिंपली हम ed लगाते हैं. तो वक्त अगर आप देखें कि हम इस वक्त पे यहाँ पे मौजूद हैं, if we take the analogy of a time as a line, तो अगर हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं तो इससे पहले के जो वाक़यात, इसके पीछे के जो वाक़यात हैं उनको बयान करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. Now let us learn about some basic use of the past tense. Completed action in the past. It is simple past tense is used to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Examples: I saw a movie yesterday, कि मैंने कल एक मूवी देखी. Last year I traveled to Japan. ये ed. saw जो है see की दूसरी फॉर्म है saw, और ये इरेगुलर वर्ब है. ठीक है. रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं वो उनके साथ आप ed का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन saw जो है ये दूसरी फॉर्म है और इरेगुलर वर्ब है. इसके अलावा लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड ed traveled to Japan. He washed her car, कि उसने उसकी गाड़ी धोई. ठीक है. सेकंड यूज़ है इसका, it is a series of completed actions. We use the simple past to list a series of completed actions in the past. These actions happen in a sequence such as first, second, third and finally. First I finished work, then I walked to the market and finally reached home. ठीक है. तो आपको बोल्ड में जो वर्ब्स नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट आई फिनिश्ड द वर्क, देन वॉक टू द मार्केट एंड फाइनली रीच्ड होम. ठीक है. दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड, these verbs are used to express the simple past tense. I arrived from the airport at 8, suddenly checked into hotel,
at 9 and met the other colleagues at 10. ठीक है, तो arrived, checked और met. met जो है ये meet की दूसरी फॉर्म है और again it is an irregular verb. ठीक है. Third use of the past tense, single duration. The simple past tense can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a long action often used with expressions like for 2 years, for 5 years, for 5 minutes, all day और all year. ठीक है, इस किस्म के एक्सप्रेशन होते हैं. I lived in Gilgit for 2 years. Live ed again. ठीक है. Samina studied Arabic for 5 years. एग्जाम्पल है they sat at the beach, कि वो बीच पर बैठे. We talked on the phone for 30 minutes, कि 30 मिनट्स के लिए हमने फ़ोन पे गुफ्तगू की. We waited for them for 1 hour, कि उनका इंतज़ार किया 1 घंटे के लिए. ठीक है, तो these expressions, these verbs, they are in the simple past. ठीक है. फोर्थ इसका यूज़ है, it is used to talk about a habit that was in the past, a habitual action. ठीक है. The simple past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as used to. To make it clear that we are talking about a habit, we often use expressions such as always, often, usually and never. I studied French when I was a child. Studied. He usually played the violin. He often performed as the theatre artist after work. They never went to school. They always skipped. ठीक है, तो these are the expressions, these are the verbs जो कि past tense में go, went, gone 3 फॉर्म्स होती हैं. went जो है वो go की दूसरी फॉर्म है. ठीक है. irregular verb है, इस वजह से उसके साथ ed का इस्तेमाल नहीं हुआ. फॉर्मिंग द सिंपल पास्ट टेंस, कि सिंपल पास्ट टेंस जो है वो बनता कैसे है. जो वर्ब्स ई में एंड होते हैं उनके आगे हम सिंपली डी लगा देते हैं. जैसे लिव है तो लिव्ड, डेट है तो डेटेड. अगर वर्ब जो है वो वाई में एंड हो रहा है, ठीक है, जैसे ट्राई है तो वाई को हम आई में कन्वर्ट करते हैं और ई डी लगा देते हैं. ट्राइड, क्राइड, फ्राइड. ठीक है, इस किस्म के अल्फाज. 1 वावल प्लस 1 कॉन्सोनेंट. टैप्ड, अगर आखिर में फ और टी जो है तो फी को डबल कर देते हैं और ई डी. टैप्ड, कमिटेड. ठीक है, और बाकी जितने भी हैं उनके साथ आप ई डी का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे आपका सिंपल पास्ट टेंस बनता है. So that is the structure of simple present tense. Now we are going to move on to next page. ठीक है जी. Although many verbs in English form their past tense with ed, some do not. These are called irregular verbs. The 3 most important irregular verbs are be, have and do. Be is the most difficult because its forms are different depending on subject. ठीक है. बी की जी वाज वर इसकी फॉर्म है. ठीक है, और डिफरेंट मतलब प्रोनाउंस जो हैं उनके साथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोनाउन ये जो फॉर्म है वर्ब की चेंज होती रहती है. और हैव और डू जो है, ठीक है, हैव की अपना बेस फॉर्म हैव है, पास्ट टेंस इसका हैड. डू की जो पास्ट टेंस की फॉर्म है वो है डिड. ठीक है. इसके अलावा कुछ और ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि चेंज नहीं होते, जैसे कट है फॉर एग्जांपल. कट जो है वो पास्ट टेंस में भी कट ही रहेगा. हिट है, फिट है,
फिर बाकी जो हैं वो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें वावल चेंज होता है, जैसे कैट है तो गॉट हो जाएगा, रन है तो रैन हो जाएगा, सिट है तो सैट हो जाएगा, ड्रिंक है तो ड्रैंक हो जाएगा। बाद फिर वर्ब्स हैं जो कि कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, जैसे कैश जो है वो इट विल बी caught, bring will be changed into brought, teach will be changed into taught. I am sure you have learned about these forms of verb at school level, and you are well aware of these regulars and irregular verbs, and I need not go into detail further. Then there is this exercise number 6. Here is an easy exercise that will help you choose the correct simple past tense verb from the given verb in the box. ठीक है, तो इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है। I was dashed to my birthday party from my niece. तो I was invited, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, I was invited. My brother dash a new motorcycle last week. इसमें क्या होगा, bought. Amina recently dash her old teacher after years. तो इसमें क्या होगा, visited. Junaid and Laila dash the report. So we can say they read the report. I dash a beautiful ready to wear dress at the shop. इसमें हम कह सकते हैं saw, मैंने देखा. The friends are not talking these days because they have recently dashed with each other, recently fought. Mahmood dash part time to make some money, worked. My elder sister dash for years at college, studied. My children really स्टडीड या फिर वर्कड भी हो सकता है, स्टडीड भी हो सकता है, तो दोनों में से जो आपकी मर्जी है आप लगा लें. वर्कड स्लैश स्टडीड. आई डैश माई फ्रेंड आफ्टर 10 years. आई visited. इसमें saw भी हो सकता है, visited भी हो सकता है, दोनों में से जो भी ऑप्शन आप लगा लें तो both options are correct. Okay. Now there is this exercise number 7. Here is an exercise that will give you practice in forming simple past tense of the regular verbs. My grandfather had a very exciting life. When he was young, he lived. His parents raised cattle and he looked after the cows. When he was 18, he went to university where he studied philosophy. He also play की दूसरी फॉर्म क्या होगी जी, PLAYED, played the piano in a popular band. He try की दूसरी फॉर्म क्या होगी, tried to join the Air Force but he ended, ENDED.
ended up in the Navy. In the Arabian Ocean during the war, a torpedo ripped a hole in the side of his ship, and the ship was destroyed. Only 5 men escaped. They sailed in a lifeboat back to the shore. So this is how we solve this type of activities. A young boy Bilal is asking his grandfather a lot of questions. Read the conversation between them and notice some expressions are in the present perfect tense and some are in the simple past tense. Grandfather, have you seen a lion? Have you seen a lion? Okay, it is a present perfect tense. Grandfather says, yes, I have. Yes, I have is again present perfect tense. When did you see a lion? When did you see a lion? It is past tense. When I was in Africa, when I was in Africa, again past tense. Grandfather, have you ever been to England? Have you ever been to England? It is again a present perfect tense. Yes, I have. When did you go to England? When did you go to England? Past, simple past. In 1960, in 1960s again simple past. Now read another dialogue between Bilal and his grandfather. Bilal is asking his grandfather questions about his journey to Nanga Parbat. Read it carefully and then pick out the expressions that are in present perfect tense and in simple past tense and write them down separately. जी अब इसको आप रीडिंग दें और एक्सप्रेशंस को नोट करें. जो एक्सप्रेशंस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं उनको अंडरलाइन करें और जो सिंपल पास्ट के हैं उनको आप हाईलाइट करें. ठीक है बेटा, गिव इट ए रीडिंग. प्लीज़ टेक 2 minutes. Okay, now let us move to exercise number 9. Mr. Amanullah is very angry with her. Mrs. Amanullah is very angry with her husband because Mr. Amanullah, she wants to go and stay with her parents for some time. Mr. Amanullah is trying to convince her not to go. Match Mrs. Amanullah's accusation with Mr. Amanullah's explanations. Notice the use of present perfect and simple past tense. ठीक है, अपना कॉलम मैच करना है. लास्ट फ्राइडे यू रिफ्यूज टू कम विद मी टू सी हर. इसको जो है वो आप देखें. कॉलम को आपने मैच करना है. ठीक है, तो नंबर 1 विल मैच नंबर E. लास्ट मंथ व्हेन आई वाज इल यू डिडंट इवन टेक मी टू डॉक्टर. So it will be, I have always taken care of you. Last week you shouted at me. I have always been kind to you. Last year you refused to buy me the ring. I have always been generous to you and bought you things. Last Tuesday night you went out and came past midnight.
आई हैव नेवर लेफ्ट यू अलोन, ठीक है। तो ये एक्यूजेशंस हैं, और उसके बाद जो है ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब के सब जो है पास्ट टेंस में, और जो रिप्लाइज हैं ये सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो रिकॉर्डेड टेक्स्ट है इसको आप देख लें एक्सरसाइज को, ठीक है, एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट section, that is section C, reading, and it is concerned with predicting the content of a book। कि किताब जो है उसके मौजू के बारे में प्रिडिक्ट करना कि किताब किस मौजू पे लिखी गई है। When we read, we usually read for a particular purpose। जब कभी भी जो हमारी रीडिंग होती है वो एक ख़ास मकसद के लिए होती है। For instance, we read the front page of the newspaper to find out what latest news is। We read a train timetable to find out when trains leave and arrive। We read a telephone directory to find out someone's telephone number। कि जो भी हमारी रीडिंग होती है उसका एक ख़ास किस्म का मकसद होता है। कि अगर हम कोई किताब देख रहे हैं या कोई अखबार देख रहे हैं या कोई ट्रेन का शेड्यूल देख रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। बिना मकसद जो है वो हम इस किस्म की एक्टिविटी के अंदर खासकर हम लोग तो इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होते। तो व्हाट अबाउट द बुक्स? वी रीड बुक्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। वी रीड नावल्स फॉर एन्जॉयमेंट, कि हम नावल्स को पढ़ते हैं एंजॉय करने के लिए। वी रीड ट्रैवल बुक्स आइदर फॉर एन्जॉयमेंट और टू फाइंड आउट अबाउट अ कंट्री वी वांट टू विजिट। वी रीड अ टेक्स्ट बुक टू लर्न द सब्जेक्ट वी आर स्टडिंग एंड सो ऑन। व्हेन वी गो टू bookshop to buy a book, when we select one, how do we know that it will be interesting and serve our purpose? How do we know that it will satisfy or answer our requirements? We do not have to read the whole book to find out what it is about. We can get the good idea about a book when we read its title, the publisher's description about the book, the foreword or the preface, the content page, the index, the review। ठीक है, ये सारी चीज़ें किताब के अंदर मौजूद होती हैं, और जब आप किताब के टाइटल पे नज़र डालते हैं तो आपको कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाता है कि ये किताब किस मौजू पे लिखी गई है। उसके बाद पब्लिशर जो है वो किताब की डिस्क्रिप्शन देता है कि किताब के अंदर क्या चीज़ बताई गई है। इस पेज को जब आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा हो आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फॉरवर्ड या फिर प्रीफेस होता है। प्रीफेस जो है ये किताब का सिर्फ सा तारुफ होता है जो कि राइटर की जानिब से होता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि किताब का मौजू और किताब के अंदर किस चीज़ पे बहस की गई है। उसके बाद होता है ये कंटेंट्स का पेज। कंटेंट्स के पेज को जब आप नज़र मारते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनकी मेन हेडिंग्स क्या हैं। तो मेन हेडिंग्स को देखने के बाद आपको पूरे जितने भी कंटेंट्स हैं उनके बारे में आपके जहन में एक नक्शा बन जाता है। तो वहीं पर आप डिसाइड कर लेते हैं दैट इफ़ यू विश टू कंटिन्यू रीडिंग दिस बुक और यू विश टू लीव दिस बुक अलोन। Now we have exercise number 11 of unit number 3. Let us first of all look at the front page and the back cover of a book. The title, of course, is on the front cover and the publisher's description is on the back cover. What do these tell you about the book? Here are some statements about the book. Predict. What do you think the book is about? What does it contain? At the end of each statement, write R for the statement that you think may be right, and W for wrong, P for perhaps। ठीक है। फ्रंट कवर है इंडस जर्नी, ऑथर इमरान खान, पब्लिशर चैटो एंड विंडस। ठीक है। इंडस जर्नी is a book by Pakistan. The book is about traveling to Pakistan on foot, maybe, perhaps, P,
The book is about Imran Khan's lifestyle. I don't think so. No. The book is about mountains. It may be about mountains, perhaps. The book is about tourist sites in Pakistan. Yes, it looks like to be a book about the tourist sites in Pakistan. The book is about the author's trip in the whole country. Yes, it looks like that it is about the author's trip in the whole country. This book is Imran Khan's autobiography. I don't think so that it is autobiography of Imran Khan. Okay. Now read the back cover of the book, which has brief description written by the publishers. इसमें हमें बताया गया है कि किताब के अंदर है क्या. Indus journey is a splendid personal view of Pakistan, seen through the eyes of one of its most illustrious countrymen. Imran Khan in this book introduces foreign visitors as well as fellow countrymen to the geographical, cultural, chronological changes that Pakistan undergoes while traveling from north to south. It gives readers an idea of the diversified cultures that Pakistan is made up of and an outline of the subtle changes in lifestyle as this journey progresses via the river Indus along the entire length of the country. Imran's keen observation, vividly portrayed by the superb photography of Mike Goldwater, are sure to captivate the minds of the readers. This handsomely bound volume has almost 100 color photographs. ठीक है, तो अब हमें पता चल गया, ठीक है, कि it is a book that describes the beauty of Pakistan, and it is written by Imran Khan, and his main purpose is to inform the readers, local as well as foreigners, about the diverse culture and the beauty of this country. So now again we have to answer the question, this book was written only for the foreign visitors? No, wrong. This book discusses varied cultures of Pakistan. Right. This book is travel information booklet. Right. This book is well illustrated. Right, because we have learned that there are about 100 colored photographs. This book is the result of personal experience of the author. Yes, this is the personal experience of the author. Now read the content page of the same book. अब जो है वो content page के बारे में बताया गया है. Use the contents page to answer the following questions. Put yes or no against each. Content page क्या है? Sindh, the Punjab, the North West Frontier. ठीक है, इसमें सिंध को डिस्कस किया गया है, पंजाब को डिस्कस किया गया है, और NWFP उस दौर में होता था, ठीक है, उसको डिस्कस किया गया है. I want to learn how to travel to different provinces in Pakistan. Will this book help me? Yes, it will help you. I want to learn how to make my own travel plans for visiting Pakistan. Will this book help me? Yes. I would like to learn how to paint village scenes. Will this book help me? No. I want to learn the different languages spoken in Pakistan. Will this book help me? No. I want to learn about Imran Khan's life. Will this book help me? No. So far we have seen that the front cover, the back cover, and the content page of the book. Now you have a fair idea about what kind of book this is and what information it gives. Now let us look at how the preface further clarifies our understanding about the book Indus Journey. ठीक है, so now you have to give reading to this preface. Pakistan, as Imran tells it, is interwoven with the story of factual history and myths. Starting from the arid plains of Thatta with his photographer friend Mike Goldwater, Imran travels the whole Pakistan using the Indus River as his constant guide and companion. The
photographs in the book blend well with the image that Imran creates through his narration. Quite preserved in this book, one will find the now decaying majestic palace of Bahawalpur, which until 1974, on the request of Bhutto, provided lodgings and catering services to some 7,000 guests. The red bricks and marble shrine of Saint Shah Rukn Alam clearly betrays its otherwise ordinary surroundings. Some of the facts documented in this book will catch the readers unaware. One learns about Shahbaz Qalandar, a saint from Sehwan who, as a punishment for the cruel Raja, waved his staff and turned his entire fort upside down. His fort lies buried to this day, as anyone trying to excavate it meets with the haunting visions and in some cases even death. Hollywood comes to life as we visit the palace of the Nawab of Bahawalpur. Imran recollects his childhood when he visits his regular lodgings of the past, hunting wild boar and partridges on the salt range, the killing of the donkey by a leopard at Tonga Gully, and being ambushed by his own cousins who mistook him for the enemy during the 1965 war, provide some amusing and touching anecdotes. This master product of Imran is also littered with quotes from the most interesting sources. At the end of the day, one feels that it is we, the readers, and not Imran, who have wholesomely benefited from the fruits of his labor. After reading the preface, which of the following titles do you think would be discussed in the book? Add a smiling faces in the box for the titles that you think you will find in the book, and sad face for those topics that you might not find. ठीक है ना, तो इसमें पॉलिटिक्स की बात है, ना वुमेन राइट्स की बात है, रिलीजन की बात इसमें होगी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस की बात है, सॉल्ट रेंज की बात है, आर्किटेक्चर की भी बात है, शहबाज कलंदर ऑफ सेवन शरीफ की भी बात है, बिजनेस की बात यहाँ पे नहीं है, आर्ट की बात नहीं है, चाइल्डहुड मेमोरीज की बात इसके अंदर मौजूद है. ठीक है. सो नाउ वी आर अप टू एक्सरसाइज नंबर 16. Here are titles of the books in column 1 and topics that these books will cover given in column 2. Which book do you think will tell you about a certain topic? अब आपने जो है वो मैच करना है. क्रॉप प्रोडक्शन इन सिंध जो है इट इज़ एग्रीकल्चर. Journey through Pakistan, it is travel and tourism. The Great Mughals, it is about history. ठीक है. Freedom at Midnight, it sounds that it is about politics. The Pathans, it seems it is about culture. ठीक है. तो ऐसे आपने टॉपिक्स को टाइटल्स के साथ हमने एक अंदाज़ा लगाकर मैच किया. नाउ वी आर इनटू सेक्शन डी of unit number 3, and section number D is again concerned with writing letters. However, this time we are not going to write an informal letter. This time we are going to write a letter of apology that has some sort of seriousness in it. So saying you're sorry. ठीक है. Each of us has at one time or another said or done something that we wish we hadn't said or done. Rather than worry about the mistakes, we should take quick action to remedy the problem and then get on with life. An effective letter of apology is an important part of that process. In this section we shall look at how a letter of apology is written.
कि गलतियाँ हम सब से होती हैं, ठीक है, और गलतियाँ हम सब करते हैं। इस सेक्शन में हमें ये बताया गया है कि इफ़ यू हैव डन रॉन्ग विद समबडी, अगर आपसे कुछ गलती हुई है या अगर आपने किसी दोस्त का दिल दुखाया है, तो इट इज़ नेवर टू लेट फॉर एन अपॉलोजी, कि आप अपोलोजाइज़ करें, माफ़ी मांगें, माजरत करें, एंड मूव ऑन विद योर लाइफ, ठीक है। When do we need to apologize, and for what reason? When we feel bad about what we have said or did, we say, I'm sorry. But when we write an apology letter, we need to write it with elegance and grace. Write an apology letter takes a lot of hard thinking about yours and others' feeling. When you want to apologize to someone, you want to make sure that you say and write the right words to satisfy that person's emotions. When writing this type of letter, it is important that you prove to another person that every word you say comes from your heart and is really meant to be accepted. कि इस लेटर में जो अल्फाज हैं ऐसा फील होना चाहिए कि वो आपके दिल से निकल रहे हैं. In other words, you really mean what you say. The next thing that needs to be acknowledged is not only what the problem is, but how to solve it. Let the reader know that you were wrong and that you are sorry. Here are a few important suggestions to help you write good letter of apology. Number 1 पे timing. Timing जो है उसकी बहुत ज़्यादा significance है, ठीक है. जो एक्शन होता है वो वक्त पे होता है. तो if you had done something wrong, you need to apologize as soon as possible. ASAP, as soon as possible आपको लेटर ऑफ अपॉलोजी जो है वो लिखना चाहिए. नेक्स्ट है जी एक्शंस. rather than focusing on the damage you have caused, write about the things you will do to improve the situation. कि जो नुकसान हुआ है उस पर आपका ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए. रादर जो आपका फोकस है वो इस चीज़ पे होना चाहिए दैट हाउ इज़ इट दैट यू आर गोइंग टू चेंज द सिचुएशन, हाउ कैन यू इम्प्रूव इट नेक्स्ट टाइम. बी ब्रीफ. ब्रीफ का मतलब ये है कि ज़्यादा लंबी चौड़ी ना छोड़ें, सीधी सीधी बात करें. सिंसियरिटी का एलिमेंट होना चाहिए. नो वन वांट्स टू रीड ओवरली ड्रामेटिक लैंग्वेज, कि जो है वो ड्रामेबाजी और इस टाइप की जो लैंग्वेज है उससे अवॉइड करें. टोन, लहजा जो है आपका, ठीक है. योर अपॉलॉजी लेटर शुड बी कंसिडरेट एंड रिस्पेक्टफुल. रिमेंबर यू आर ट्राइंग टू रीबिल्ड अ डैमेज्ड रिलेशनशिप, ठीक है. वाई एन अपॉलॉजी लेटर इज सो इम्पॉर्टेंट, या वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर ऑफ अपॉलॉजी. राइटिंग एन अपॉलॉजी लेटर शॉर्टली आफ्टर डूइंग समथिंग रॉन्ग कैन यूजुअली help save a relationship before a wound becomes a scar and the damage becomes irreparable. कि जितनी जल्दी आप लेटर ऑफ अपॉलॉजी या फिर रियल लाइफ में गलती के बाद माजरत कर लें तो उतनी जल्दी ही जो है वो आपका रिलेशन इम्प्रूव कर जाएगा. आप जितना ज़्यादा डिले करते चले जाएंगे उतना ही रिलेशन आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा. You can usually find forgiveness and understanding if you acknowledge what you did wrong and express sincere regret in your apology letter. ठीक है कि अगर आप अपनी गलती को एक्नॉलेज करते हैं और उसको फ्यूचर में अमेंड करने की कोशिश करते हैं, उसका प्रॉमिस करते हैं, तो यूजली आपका रिलेशन जो है वो कायम रहता है. यू कैन हेल्प टू रीबिल्ड योर credibility in your apology letter if you promise not to repeat the wrongdoings. You can use your apology letter to assure the injured party that you truly value the friendship and do not want to lose it. You may find that if you apologize and accept responsibility for what you did, the injured party may also accept some responsibility for the problem and apologize to you in return. ठीक है. इसके बाद लिखने के टिप्स हैं चंद, ठीक है. राइट हैंड रिटन अपॉलॉजी लेटर इफ़ इट इज़ इनफॉर्मल एंड पर्सनल. अगर ज़ाती आपका रिलेशन है वहाँ पे कुछ ऐसा वैसा हुआ है तो आप हैंड रिटन, हाथ से लेटर लिखे. एक्सप्रेस योर अपॉलॉजी इन द बिगनिंग ऑफ योर लेटर, कि आगाज़ में ही सबसे जो
आगाज़ की लाइंस हैं उनमें आप जो है वो माजरत कर लें। माजरत करने के बाद स्टेट एग्जैक्टली व्हाट यू डिड रॉन्ग। अर्ली इन द अपॉलजी लेटर आई shouldn't have lost my temper when, or I have looked all over but I am afraid I have lost your earrings। ठीक है, तो जो भी गलती हुई है और जो आपसे गलती सरजद हुई है और उसके साथ माजरत जो है वो दोनों अटैच करके शुरू की लाइनों में आप लिख दें। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट यू डिड एंड डोंट ब्लेम द अदर पर्सन, कि जो आपसे गलती हुई है उसकी ज़िम्मेदारी लें और अपनी गलती जो है वो किसी और के ऊपर उसको ब्लेम करने की कोशिश ना करें। आई एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट हैपेंड और आई नो दिस वाज कम्प्लीटली माई फॉल्ट। प्रॉमिस इन योर अपॉलजी लेटर नॉट टू रिपीट योर अनप्लेजेंट एक्शन एंड आस्क द इंजर्ड पार्टी टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव दिस, कि एक तो माजरत करें, दूसरा साथ ये वादा करें कि आइंदा ये बात जो है रिपीट नहीं होगी और अगली पार्टी को मौका दें कि वो आपको ये चीज़ साबित करने दें कि आप आइंदा गलती नहीं करेंगे। सजेस्ट दैट द टू ऑफ यू शुड मीट सो दैट यू कैन अपोलोजाइज इन पर्सन एंड बिगिन टू रीबिल्ड योर रिलेशनशिप। जी, और इन पर्सन मीटिंग की रिक्वेस्ट करें इफ़ पॉसिबल। ठीक है, अब ये कि जनाब की लेटर ऑफ अपोलॉजी जो है उसका आगाज़ कैसे किया जाए, तो देयर आर नंबर ऑफ़ वेज इन विच यू कैन बिगिन योर लेटर ऑफ अपोलॉजी। सॉरी से आगाज़ हो सकता है, आई एम सॉरी, आई रियली एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, रियली सॉरी, टेरिबली सॉरी, ऑफली सॉरी। तो ये चंद एक्सप्रेशन हैं जिनको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एन इनफॉर्मल लेटर ऑफ अपोलॉजी फॉर हर्ट फीलिंग एंड इनफॉर्मल लेटर ऑफ अपोलॉजी फॉर मिसिंग एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, दो टाइप्स जो हैं वो लेटर के आपको अब आगे सैम्पल में दिए गए। एग्जाम्पल ऑफ अपॉलजी लेटर। द पास्ट फ्यू डेज आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड लास्ट वीक बिटवीन अस। आई वांट यू टू नो दैट आई फील एक्सट्रीमली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड and I take full responsibility of the incident. Everything that I am about to say is coming from the bottom of my heart. I know that it will be very difficult for you to accept my apology, but I want you to think about our friendship। ठीक है, उसके बाद आगे एक्सप्लेनेशन है कि वो जो गलती सरजद हुई उसके पीछे क्या रीज़न थी, उसके पीछे क्या लॉजिक थी। ठीक है, अब मैं एक और बुक से आपको एक जनरल फॉर्मेट इसका दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेटर ऑफ अपोलॉजी का। डियर मिस्टर एंड मिसेस लैम्बस्टन, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज़। आगाज़ से ही देखें ना, जो आगाज़ हुआ है फर्स्ट लाइन से, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज़ फॉर मिसिंग योर थैंक्स गिविंग ब्रंच ऑन November 23rd। आई होप माई लास्ट मिनट चेंज ऑफ प्लान्स डिड नॉट इनकन्वीनियंस यू टू मच। कि आपने जो इंट्रोडक्टरी आपका पैराग्राफ है उसमें क्या करना है, फर्स्ट आपने अपोलॉजी और जो आपसे मिस्टेक सरजद हुई है उसको आपने मेंशन कर देना। ठीक है, शुरू में, और उसको ज़्यादा आगे लेकर नहीं चलना। उसके बाद जो आगे है एक्सप्लेनेशन एंड पर्सनल कमेंट्स, आप वजाहत देंगे कि जो एक्शन आपसे गलत हुआ दूसरे पैराग्राफ में उसके पीछे रीज़न क्या थी। एज़ यू नो आई हैड प्लान्ड ऑन अटेंडिंग एंड वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, हाउएवर माय ब्रदर हु लिव्स इन बॉस्टन जॉर्जिया had emergency bypass surgery and his wife asked me to be with her. Had that not happened, naturally I would have been with you। ठीक है, अब ये वजाहत होगी और वजाहत ऐसी है कि जो कि एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगला बंदा जो है वो माजरत कबूल करेगा। उसके बाद अपोलॉजी को रिपीट करें। वंस अगेन आई आस्क फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इन दिस मैटर एंड होप दैट माई फ्रैंटिक लास्ट मिनट कॉल टू पो आउट वाज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो अपोलॉजी आपने आखिरी पैराग्राफ में दोबारा रिपीट कर दी। उसके बाद सिंसियरली और सिग्नेचर और नीचे नेम। ठीक है, तो ये लेटर ऑफ अपोलॉजी का पैटर्न है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको आप रीडिंग दे लें। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 16 है, पिक आउट एट लीस्ट 3 एक्सप्रेशंस दैट जोया हैज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस हर अपोलॉजी। कि इसमें से आपने 3 एक्सप्रेशन जो हैं वो चूज़ करने हैं। 2 मिनट ले लें, 3 मिनट लेटर को रीडिंग दें,
और वो एक्सप्रेशंस ढूंढें कि जो कि ज़ोया ने यूज़ किए हैं माजरत करने के लिए, और उनको अंडरलाइन करें। शाबाश। Okay, I hope you have done this. Now read the letter again and then pick out those expressions that point at incident. Exercise number 17 है, इसको आपने solve करना है. Now we have exercise number 18. Now write an informal letter of apology to a friend on any one of the following issues. Following are the suggestions that we have given you above to compose a well-worded letter of apology. ठीक है. Losing the most precious diamond ring of your friend. 3 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, उसमें से कोई एक टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर you have to write a letter of apology. Number 1 पे you have lost the precious diamond ring of your friend and now you wish to write a letter of apology. Number 2, refusing to help when your friend needed your help. दूसरा टॉपिक है कि आपके दोस्त को हेल्प की ज़रूरत थी लेकिन उस टाइम आपने हेल्प करने से रिफ्यूज़ कर दिया. और अपोलोजाइज फॉर मिसिंग एन अपॉइंटमेंट. ठीक है. Whether you have missed an appointment or will miss an appointment in the future, a note to the person concerned is a courtesy that will be appreciated. It shows that you do take the relationship seriously. This letter of apology can both be informal and formal. It is a formal letter that then be concise and polite and choose words writing style accordingly. Apologize for a missed deadline as soon as possible. After the incident, the tone of your letter should be considerate and respectful because you have probably caused some inconvenience. The letter should focus on actions you will take to make up for the missed deadline. A sincere, well-worded apology followed by positive action can do much to undo any damage to your reputation. Read this letter that Nabil has written to his boss, Mr. Bakar Hussain. You will notice that it is neither too formal nor too informal. ठीक है. ये लेटर है जो कि लिखा गया है because Nabil has missed an appointment. वर्डिंग इसकी जो है उस पर गौर करें. I would like to apologize for not attending the luncheon meeting that you have given in the honor of foreign delegates.
The reason being that I had to receive my parents at the airport who were arriving from Karachi, and the flight got delayed for an hour. Once they arrived, I hurried to drop them home and get ready to come to the lunch meeting. But unfortunately, my car stopped half the way through. I rushed to get a mechanic from the nearby car repair shop, and that delayed me for one more hour. By the time I managed to get my car ready, I noticed that it was nearly 4 in the evening, and I thought it is now too late to attend the meeting. I hope you will understand my inability to attend the meeting and assure you that the delay was beyond my control. Sincerely yours. ठीक है, तो लैंग्वेज देखें कि बिल्कुल जो है वो सीधा साधा और अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, कोई लगी लिपटी बातें नहीं की गई, ठीक है। और जो वो रीज़न है मीटिंग को मिस करने का वो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कन्वे कर दिया गया है, ठीक है। नाउ लेट अस नाउ देयर इज़ अनदर एग्जांपल, प्लीज़ रीड इट आउट. You can take 3 minutes to read this letter. Okay, now let us move on to the next section, that is section D, listening. And it is listening to the news, कि खबरें जो हैं उनको सुनना. So why do we listen to news? Because we want to know what's happening in the country and around the world. Listening to news is a habit. A lot of people just cannot miss news broadcasts, whether it is on radio or TV. कि ख़बरें सुनना जो है वो लोगों का एक मशगला होता है, और लोग ख़बरें सुनते हैं इस वजह से ताकि वो जान सकें कि उनके इर्द गिर्द ये दुनिया में क्या हो रहा है. To keep update with the latest news, people listen to the news on television and radio. A lot of you people may find understanding news in English difficult. कि इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. डू यू ऑल्सो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फॉलो इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन्स? वाई डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन्स? Well, maybe because the news reader reads fast, and maybe you do not understand the accent or pronunciation of the news reader, or maybe you find that there are many difficult words used that hamper your understanding. In this section, we will give you some tips and practice that will help you understand the news in English. Now listen to the news. The newscaster. Assalamu alaikum. The Standing Committee of Senate on Foreign Affairs demanded of the governments of Pakistan and India to release prisoners of each other's countries unconditionally. Secretary Foreign Affairs briefed the Senate Standing Committee on Foreign Affairs over the issues of Pakistani prisoners in Indian jails. He said prisoners' release could be a very important step toward confidence-building measure between the two countries. The committee meeting, presided over by the prominent senator, demanded that the Indian government should allow Pakistani consular to meet Pakistani prisoners in Indian jails. Foreign secretaries of both the countries would meet next week in Islamabad over prisoners' release issue, and then in New Delhi on August 28.
So you have just listened to the news in English. Can you write answer to the following questions? के following questions हैं, इनके आप आंसर लिख सकते हैं. What was the news about? कि खबर किस बारे में है? तो the news is about exchange of prisoners between government of Pakistan and government of India. What different places were mentioned? Pakistan, India, Islamabad and New Delhi were mentioned in the paragraph. How the prisoners issue will affect the relationship between Pakistan and India. That the successful exchange and release of the prisoners from both sides will develop confidence in both countries. It will be a confidence building measure between the two countries. When are the foreign secretaries going to meet in which cities? So the foreign secretaries of both countries would meet next week in Islamabad and on August of 28 in New Delhi. ठीक है जी. So if you wish to learn how to improve your understanding of the English news broadcast, then follow these guidelines. कि चंद guidelines हैं आपके पास, आपको दी जा रही हैं, इनको फॉलो करें. And these guidelines will certainly help you improve your understanding of the English news. Make some notes of the main stories. कि जो main story है उसके कुछ notes बना लें. Write any names of people or places. कि जगहों के और लोगों के नाम लिख लें. Don't worry about how much you understand. Listen to or watch the report first a few minutes, few times just for fun. Stop and review as many times as necessary. कि रुकें और रिव्यू करें जितनी दफ़ा हो सके. Write a brief summary of each story. हर स्टोरी जो है न्यूज़ की उसका एक अपने अल्फाज में खुलासा बनाएं. Set yourself a few questions to answer. Then listen again for the answers. Make notes of any new vocabulary you think is useful. कि अगर कुछ नए वर्ड्स आपको सुनने के लिए मिले हैं तो उनकी एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को मेंटेन करें. Why not listen to the news with a friend? एक दोस्त के साथ मिलकर खबरें सुनें. You can help each other by talking about what you each understand. When you feel confident, try listening to the news in English in different accents. ठीक है. Now there is exercise number 21. Now listen to the sports news. Read the following questions and try to write answers to them as you listen to the sports bulletin. ठीक है. टेक्स्ट जो है वो नीचे दी गई है, इसको ठीक है इसको रीडिंग दें और जो ऊपर क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर्स अटेम्प्ट करें. Now exercise number 22. Weather reports normally come in the end of the news. Listen to this weather update and then fill in the missing words in column 2 that describe the weather of the city. ठीक है. इस रिपोर्ट को रीडिंग दें और उसके बाद ये जो आपको कॉलम दिया गया है मुख्तलिफ शहरों के बारे में, इसको आपने फिल करना है. ठीक है. Please read it out, keep the information in mind and then fill the column.
Okay ji, that is the end of unit number 2. I hope you have understood the things. If you have any questions, you can feel free to ask me. And for now, take care. Allah Hafiz. See you tomorrow, inshallah.